Hello everyone, hope you guys doing great. This is Adaptive Software Development and we are back with another video. Before we get started, a little reminder as usual. Don't forget to like and subscribe our channel, it will motivate us to carry on. Without wasting your precious times, let's start. The next phase of SDLC is Waterfall model. We all know that SDLC means Software Development Life Cycle. The Waterfall model is the classic SDLC model that is widely known, understood, and commonly used. It was introduced by Ross in 1970 and is still commonly used and followed approach by software development in various organizations across various industries. ये जो SDLC वाटरफॉल मॉडल है ये कॉमनली यूज होता है और वेरियस कंपनीज और इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसी को यूज़ करते हैं। ये रोएस ने 1970 में डेवलप किया था। इन वाटरफॉल मॉडल each phase can start after the earlier life cycle phase is completed. That's why it is a linear model with no feedback loops. इसमें ये बता रहा है कि हर नया वाटरफॉल का जो फेज़ है वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि वो पिछले वाला वाटरफॉल लाइफ साइकिल का फेज़ कंप्लीट ना हो जाए। इसी वजह से ये लीनियर है और कोई फीडबैक लूप्स नहीं है। As you can see in the diagram is the steps life cycle of the waterfall model. Waterfall model strengths: easy to understand and easy to use. Provides structure to the inexperienced team. Milestones are well understood and developed. Self-requirement stability, and it is ideal for management, reporting, monitoring and planning, etc. etc. Waterfall model works well when the quality is more important than the cost of the project. इसमें वो ये बता रहा है कि ये वाटरफॉल मॉडल इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि जो बिगनर्स होते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर देता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू और एम होता है वो वेल अंडरस्टूड होता है। रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जाता है और रिक्वायरमेंट्स ली भी काफ़ी अच्छे तरीके से जाती है। SDLC वाटर मॉडल जो है वो आइडियल है मैनेजमेंट के लिए जो कि रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, मॉनिटरिंग करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट को प्लानिंग करना चाहते हैं। वाटरफॉल मॉडल SDLC का तब परफेक्ट होता है जब कि प्रोजेक्ट टीम जो है वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी पर तवज्जो दे, ना कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर। एंड नाउ वाटरफॉल मॉडल वीकनेसेस: आइडियलाइज, इट डज नॉट मैच रियलिटी, वेल इट इज़ अनरियलिस्टिक, यू कांट एक्सपेक्ट accurate requirements in early time of the project, doesn't reflect iterative nature of exploratory development that is more common, well it is difficult and also expensive to changes. Software is delivered only at the end of time or project when or due to delays in discovery of serious effects or work and the possibility of absolute requirements. Significant management overhead which can be costly for small term project. Requires experience resources at every phases like designer, coder, analyst and tester. The testing of the project can start only after the project is complete and testers are not involved in early development phases. The expertise of the cross-functional team is not shared as each phase is executed in slots. इसमें वो ये बता रहा है कि इसकी वीकनेस में से एक खामी ये है कि ये रियलिटी के करीब नहीं है। हम रिक्वायरमेंट्स को अर्ली फेजेस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब हम कोई चेंजिंग करते हैं तो ये बहुत कॉस्टली होता है। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता हम इसको आगे भेज नहीं सकते।
डिफेक्ट्स भी सीरियसली होते हैं जब ये एंड में पता चलता है। इसमें एक्सपीरियंस टेस्टर चाहिए, एक्सपीरियंस डिज़ाइनर एनालिस्ट चाहिए। और मेन डिफेक्ट ये है कि टेस्टर जो होते हैं वो प्रोजेक्ट बनने के बाद ही टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्टर इससे पहले प्रोजेक्ट के किसी भी डेवलपिंग फेज में इंक्लूड नहीं होते। इसकी एक्सपर्टीज़ शेयर नहीं की जाती वो नीचे स्लॉट्स के लिए। मिलते हैं इसके दूसरे फेज में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।